and welcome back to ABC of Accounting. In the previous video, we started off with Chapter 2, which is Basic Accounting Terms. So let's continue with the topic and discuss some more accounting terms. So students, हमने अपने previous video में discuss किया कि हमने raw material purchase किया, बैंक से loan लिया, जो भी cakes produce किए हमने उसको sell off किया. ये सारी activities क्या हो रही हैं? इन सारी activities में money involved है. ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि इन सब में मनी इन्वॉल्व है. जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया उसमें भी पैसा इन्वॉल्व था. जब आपने बैंक से लोन लिया उसमें भी पैसा इन्वॉल्व था. जब आपने अपने केक्स को सेल किया उसमें भी पैसा इन्वॉल्व था. तो ये सारी एक्टिविटीज़ कैन वी कॉल देम एज इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस, वी कैन कॉल, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ मनी. And the same economic activity is known as transaction in business. So, transaction means an activity which causes exchange of money, goods or services. When I say activity, it is economic activity because all economic activities includes money, and it also causes changes in the financial position of the business. Now, again, transaction also has 4 categories. Cash transaction means when you do some economic activity on cash basis. For example, आप कुछ raw material purchase कर रहे हो और आप उसके return में आप cash pay कर रहे हो. अगर आप वही raw material credit basis पे ले रहे हो तो वो credit transaction बन जाती है. या आप अपनी products को credit पे sale कर रहे हो कि आपको payment आपका customer बाद में दे सकता है तो वो credit transaction बन जाएगी. Internal transaction means वो transactions जो within the business होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने प्लांट में प्लांट एंड मशीनरी को यूज़ कर रहे हो. जब आप मशीनरी को यूज़ करते हो तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होती है. जब डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. अब ये भी एक ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व है क्योंकि एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रांजेक्शन. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन विच इज डन विद अ थर्ड पार्टी और आउटसाइड. सो स्टूडेंट्स, आप अपने बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे हो. आप परचेज भी कर रहे हो, आप सेल भी कर रहे हो. सो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हैं. आपको लगता है कि आप ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को याद रख पाओगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग में अकाउंट क्रिएट करते हैं. सो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जिसमें हम सारी जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी समरी को रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज किए कैश में, आपने सैलरीज पे की कैश में, राइट? आपने गुड्स सेल किए कैश में. सो परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ सैलरीज, ये तीनों ट्रांजेक्शन्स में क्या इन्वॉल्व है? कैश. सो इन तीनों ट्रांजेक्शन्स में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ एक आइटम है जो सिमिलर है, वो है कैश. सो वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो सिमिलर नेचर की हैं या उसमें कोई पर्टिकुलर आइटम रिलेटेड है एक दूसरे से, उसको हम एक पर्टिकुलर जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एक समरी बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं अकाउंट. सो व्हाट अकाउंट इज? इट इज अ प्लेस वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर और रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम आर recorded. So this is how we prepare account. Account is usually in T form. It looks like the T alphabet of English. We also call it as T-shape account. So first of all, since we are talking about cash transactions, so here in this account, we will be recording all the transactions which are related to cash. So at the top of the T account, I will write the name, the account head, cash, and in this account, I will be recording all the transactions which are related to cash. Account is written in short form as account, right? The left side of the account is the debit side and the right side of the account is the credit side. It has 3 columns on each side. Date, you write here date. Particulars, whatever the transaction has taken place, say purchase, sale. Here you write the amount. Again, date, particulars and amount. What is debit and what is credit? That we will be discussing when we will do लेजर. अब स्टूडेंट्स, जब आप अपने गुड्स को सेल करते हो तो क्या होता है? आप कुछ रिसीव करते हो. सो वट एवर यू रिसीव इज नोन एज रिसीट इन अकाउंटिंग टर्म, राइट? सो रिसीट कैन बी रेवेन्यू इन नेचर और इट कैन बी कैपिटल इन नेचर.
So when we say it is revenue in nature, that means the receipts which you are getting on daily basis. आप रोज अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे तो डेली बेसिस पे आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, तो वो आपकी रेवेन्यू नेचर है. जब आप कुछ भी आप सेल करते हो, आप अपने एसेट्स को सेल करते हो, वंस इन अ वाइल ऐसा होता है, आप रोज अपने एसेट्स को सेल नहीं करते, कभी कभार सेल करते हो, वो क्या बन जाती है आपकी कैपिटल रिसीट. पैसा आपको वहां से भी आ रहा है लेकिन वो आपको डेली बेसिस पे नहीं आता. So that becomes your capital receipt, which is non-recurring in nature. The receipts which are recurring in nature are known as your revenue receipts. जो आप daily basis पे जो भी sell करते हो, उसके basis पे जो भी आप earn करते हो, आपके पास receipts आती हैं, उसको आप revenue receipt कहते हो. So receipt can be revenue receipt or it can be capital receipt. When we talk about revenue receipt, it is the amount received from the sale of goods which is done on daily basis, and capital receipt means amount received from the sources which are not of revenue nature, for example sale of asset. Let's move on to the next accounting term, which is expenditure. Now what expenditure is? Expenditure is any amount spent, right, whatever you are spending on acquiring of fixed assets. So when you spend any amount on acquisition of fixed assets, that becomes your capital expenditure. And when you spend amount on the purchase of goods and services, that becomes your revenue expenditure, right? So again, capital expenditure is non-recurring in nature because you don't perform such expenditure on daily basis, and revenue expenditure is recurring in nature because you have to incur such expense regularly. The next is expenses. Now expenses and revenue expenditure are more or less one and the same thing. Expenses also talk about the amount spent to earn revenue, and that's what I told you in case of revenue expenditure, that this is the expenditure which you incur to earn revenue, because when you will purchase goods and services, then only you will be able to sell your product, your final product, and you will generate revenue, right? Similarly, in expenses also, whatever amount you spend is spent to earn revenue. So expenses also are of two types: prepaid expenses and outstanding expenses. Prepaid expenses means, as the name suggests, which are already paid in advance, and outstanding means which are due but not paid. Suppose you are happy with the performance of your employees and you have paid the salaries to your employees in advance. So since the salaries are not yet due and you have already paid the salaries in advance, so that becomes prepaid, right? But if suppose the salaries are due, you have not paid salary of the present month or of the previous month. It is due but you have not paid, so it becomes your outstanding expense. So this is the difference between prepaid expense and outstanding expense. The next accounting term is very important, which is deferred revenue expenditure. It is also a type of revenue expenditure जिसको आप incur एक बार करते हो लेकिन इसका benefit आपको over the period मिलता रहता है. For example, advertisement. आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो तो क्या होता है, अब एक बार तो नहीं आएगी एडवर्टीजमेंट, बार बार आएगी और मे बी 2 years 3 years तब तक आएगी. सो एक एडवर्टीजमेंट जो आपको बेनिफिट देने वाली है फॉर नेक्स्ट 3 years, उसकी कॉस्ट आपने इनकर करंट फाइनेंशियल ईयर में की, बट क्योंकि वो आपको बेनिफिट नेक्स्ट 3 years में भी देगी, इसीलिए जो टोटल कॉस्ट आपने इनकर की है उस एडवर्टीजमेंट पे, उस कॉस्ट को भी आप डिवाइड कर दोगे फॉर द फर्दर 3 years. जितने साल ये आपको बेनिफिट देगा उतने साल ही आप उसकी कॉस्ट को चार्ज करोगे. So this is all about deferred revenue expenditure, and I again repeat here that this is very important. Next accounting term is income. Income is excess of revenue over expenses. Now here the term revenue is mentioned. What is revenue? Revenue means total sales. अब आपके एक्सपेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और ये दोनों टाइप्स के एक्सपेंसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे. बट अभी मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, आप वर्कर्स को वेजेस पे करोगे, आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, आप कैरेज फ्रेट पे कॉस्ट इनकर करोगे. सो ये डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट से, राइट? सो इनको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं.
सो जब टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स में से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो वो बनती है हमारी टोटल इनकम। और इसी इनकम में से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरीज, payment of electricity bills, etc., which are not directly related to the production of goods, they are your indirect expenses. And when you subtract your indirect expenses from your total income, that gives you your profit. So, profit is income earned by firm arise from operations. Now, what is the difference between profit and gain? Profit is which you earn again regularly, so it is recurring in nature, because all these activities of generating revenue and incurring direct and indirect expenses are of recurring in nature. You will do it on daily basis regularly. But gain is profit earned from the transaction of non-recurring nature. So, for example, you sell your asset. Do you sell your asset regularly? No, it is not of routine nature. So, जब आप अपने एसेट को सेल करोगे और उससे आपको कोई रिटर्न आता है, आपको कोई गेन आता है, प्रॉफिट आता है, आप उसको गेन कहते हो. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन. What is loss? Loss is excess of expenses over revenue. In simple terms, आपके expenses जो आप incur कर रहे हो वो ज़्यादा है और जो revenue है आप earn कर रहे हो वो कम है. तो जब आपके expenses exceed कर जाते हैं और आपके revenue कम होती जाती है तो firm आपकी loss incur करती है. So loss भी two types के होते हैं, gross loss and net loss. And similarly profit भी आपका two types के होते हैं, net profit and gross profit. So today we have discussed so many accounting terms and I hope you have understood them clearly. But still, if you have any doubt, any query, then please do mention in the comment section. Stay tuned. See you soon.